Okay, now we've seen what is exploratory testing, and we've seen that this is not a technique, this is an approach where the testers are at luxury to develop or design test cases and execute them, and they report kind of a log of their test execution. This is mandatory that they report their log or their execution report, but the order in which they design, explore, and execute test cases is not a mandatory fix. Okay. Now, exploratory testing phases, 4 phases in exploratory testing. First, we learn. We learn what to test. We learn how to test. We learn how to find a problem. Okay. Up against, जब हम पहले इस पे देख रहे थे, हमने टेस्ट प्लान बनाया था, we were clear what to test, what are the mix, I mean आप कौन सी approaches use करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, क्या what to test, what not to test. Here we are learning on the fly. Test design, brief test description, then a test case. Third, test execution. अच्छा जनाब, we execute results, we do test design, execute. We can do it design, execute, or design, execute. So हमने 2-3 टेस्ट केसेस बनाए, फिर उन 2-3 को एग्जीक्यूट किया, सिस्टम को लर्न किया, ऑन द फ्लाई लर्न किया, उसके हिसाब से टेस्ट केस बनाए. सो इन अ वे वी आर एक्सप्लोरिंग एज वेल एज कंडक्टिंग टेस्टिंग. थर्ड, एग्जीक्यूट हो गया. देन एनालिसिस, what has been learned about the product, what has been learned about testing, and what was the testing outcome. So हमने एनालिसिस किया कि हमारा टेस्ट, अब देखिए इसके अंदर आपके जो टेस्टिंग मीट्रिक्स हैं या टेस्ट मीट्रिक्स हैं ये भी आपके इन्वॉल्व हो गए. सो इन अ वे इट्स ए काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जो कि आपको किसी हद तक लग्जरी प्रोवाइड करेगी, लेकिन इट विल नॉट क्या कहना चाहिए, कम्प्लीटली आउट ऑफ द सीन नहीं चले जाएंगे आप कि आप चाहे टेस्ट मीट्रिक्स गैदर करें ना करें, सिस्टम को डिज़ाइन करें ना करें, डिज़ाइन होगा लेकिन एट योर लग्जरी, एट द विल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टर किसी हद तक ही आ जाएगा.